Hi everyone, welcome back to my channel. This is Nivedita Vashishta once again. As some of you might be aware that I went to a trip to Udaipur recently. So in case you're not aware already, Udaipur is a city in the state of Rajasthan in India, and it is a city which has a lot of artificial lakes and a lot of different forts and different places. It is a very famous wedding destination spot in India. I'm going to be sharing with you my top 10 places that I loved to visit and which I feel that everybody whosoever goes to Udaipur should definitely not miss. So yeah, very first place that I will highly recommend everyone to visit, the City Palace. So the timings to visit City Palace is from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. in the evening. The entry ticket to the palace is around 300 to 350 rupees per person. You'll get the ticket right at the gate of the City Palace, and also the City Palace is quite big, so it's like आपको वहाँ पे घूमने के लिए 2 to 3 hours का टाइम लग सकता है आराम से to roam around the whole City Palace. It's a very beautiful palace which was built over a period of 400 years by many different rulers at that time. पैलेस के अंदर आपको बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. बहुत अलग अलग रूम्स, राजा की लाइब्रेरीज, रानी के रूम्स और बहुत अलग अलग with a lot of history associated to it. Each and every part inside the palace has so much of history associated to it कि अगर आपके पास में गाइड नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू नो ऑल ऑफ इट. सो आई हाईली रिकमेंड यू हायर अ गाइड. आपको जैसे ही आप एंटर करोगे पैलेस, आपको वहाँ पे गाइड्स मिल जाते हैं. दे चार्ज यू, उनका स्टैंडर्ड चार्जेस है, दे चार्ज यू ₹300 फॉर द होल टूर. The second thing which I highly recommend everyone to definitely do is take a boat ride to the जग मंदिर. इस बोट राइड की टिकट आपको सिटी पैलेस से ही मिल जाती है. सिटी पैलेस के बाहर से यू विल गेट अ टिकट ऑफ 30 रुपीज़ ईच, एंड जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ से डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, सो इफ़ यू गोइंग इन द डे, सो आई थिंक द टिकट इज़ अराउंड 500-600 रुपीज़ पर पर्सन. एंड अगर आप इवनिंग में जाते हो, क्योंकि वो सनसेट का टाइम होता है, तो उस टाइम पे द टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन. जग मंदिर इज़ बेसिकली, इट्स नॉट अ मंदिर, इट इज़ एक्चुअली अ महल which is on the island, on an island basically. It's like ये लेक पिचोला के एकदम बीच में है, which is what makes it very interesting. And ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे शाहजहाँ किसी से छुपने के लिए वो वहाँ पे छुपे थे, एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज जग महल, बट उन्होंने कहा कि अगर इसे जग मंदिर कह देंगे सो नोबडी विल कम टू नो कि वो यहाँ पे छुपे हैं. सो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. वहाँ पे इट इज़ ऑल्सो सेड दैट वहाँ पे ही रह के शाहजहाँ ने ताजमहल का पूरा था आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया था कि दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. For this boat ride also, you'll have to make sure that you reach before 5 p.m. because 5 बजे लास्ट बोट जाती है वहाँ से. बोट आपको स्टार्टिंग पॉइंट से जग मंदिर तक लेके जाएंगे एंड वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे. एंड इफ़ यू आर हंग्री एंड यू प्रेफर, यू कैन ऑल्सो डाइन इन देयर. वहाँ पे बुफे अवेलेबल रहता है. If you're going near the lunch time, it will cost you something around 15 to 1800 rupees per person. And if you're going for dinner buffet, it will cost you something around 2000 to 2500 per person. And after you're done, you can just take a boat back to the starting point once again. And your to and fro journey is definitely included in the package. The next place would be Jagdish temple, and Jagdish temple बिल्कुल सिटी पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो इट्स टोटली अप टू यू. आप लोग सेम डे भी वहाँ पे विजिट कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम. काफ़ी ज़्यादा सुंदर टेम्पल है ये. एंड इफ़ यू हैव एवर विजिटेड द सन टेम्पल इन ओडिशा, सो आर्किटेक्चर कुछ वैसा है. The next thing is to attend the cultural show at Bagur ki Haveli. The Haveli is situated in the old city only, and again it's very near to City Palace and the Jagdish temple as well. वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, जिसमें राजस्थानी फोक डांस होता है, फोक म्यूज़िक. वहाँ पे कुछ लोग
बजाते हैं एंड then there's a puppet show which was one of the things that I really enjoyed. And the show is very entertaining and जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं ना तो वो जो भी ये शो वगैरह दिखाते हैं so you feel like you know उनकी livelihood भी उसी से चलती होगी. So I mean if you want to give something to them it's definitely your choice, but बहुत ही प्यारा शो होता है and इसीलिए I'm not going to insert a lot of clips but just a little bit just to give you an idea, maybe excite you a little bit and you might also feel like going there. But I highly recommend going to the Baahubali Haveli for the cultural show in Udaipur. बागोर की हवेली पे जाने के लिए यू ऑल्सो विल हैव टू बुक योर टिकट्स एंड यहाँ की टिकट्स, इस कल्चरल शो की टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, बट ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सोल्ड आउट मिलती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है. सो इट्स बेटर इफ़ यू आर लिविंग अराउंड द ओल्ड सिटी और यहाँ अगर आप सिटी पैलेस के आसपास कहीं पे आए हो सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड वहाँ जाके आप टिकट्स बाय कर सकते हो. आई थिंक 4 बजे के बाद में द टिकट्स विल बी अवेलेबल. शो टाइमिंग्स के जनरली आर फ्रॉम 7 PM to 8 PM. आप जब भी जाते हो तो आप टाइम से थोड़ी देर पहले चल जाओ सो दैट आपको आगे वाली सीट्स मिल जाए, बिकॉज आप अगर आप पीछे बैठोगे तो आपको दिख तो जाएगा बट आप इतने अच्छे से उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आप थोड़ा सा दूर हो गए वहाँ से. एंड डोंट थिंक लाइक वहाँ पे जाके ऐसा मत सोचना कि इट्स लाइक कि जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो आपकी जो पीछे वाली सीट्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है. सो प्लीज़ गो एंड टेक द फर्स्ट सीट्स, विल बी एबल टू एंजॉय द शो इवन मोर. The next thing I'll highly recommend everyone to do when you're in Udaipur is to visit the Ghats. And one of the most beautiful Ghats in Udaipur is the Ambrei Ghat, and it actually literally looks like Amsterdam. अगर आप दिन में वहाँ पे विजिट करते हो घाट अम्बराई घाट पे, so the ticket is for 10 rupees I believe, 10 or 20 rupees. And if you visit the Ambrei Ghat in the evening, then the ticket price goes straight from 10 rupees to 110 rupees. But nevertheless, the view in the night is as it is very beautiful. So in the night you will see all the lights, सारे के सारे palaces वहाँ पे दिखते हैं. You will see city palace there as well. And छोटे जो बहुत सारे बहुत famous hotels हैं which are also built very beautifully. आप वो देखोगे वहाँ पे lights बहुत ही प्यारी लगती हैं. When you go there you just feel like just sitting there and just enjoying the vibe. Like it's very peaceful. Another ghat that is there in the old city very near to the Baahubali की हवेली is the घनघोर घाट, and ये काफ़ी सुंदर घाट है. And the best thing is that there's no ticket price to go there as well, so you can go check that out. The next place would be Karni Mata Temple. So it's a very beautiful place to go, and the attraction there is that you go to the temple via a ropeway. So to go in the ropeway you'll have to buy a ticket definitely, and ticket price is around 120 or 130 rupees per person. After you get your tickets you'll have to wait for at least half an hour, and इतनी देर में आपकी टर्न आ जाएगी and फिर आप रोपवे से ऊपर जा सकते हो. At the top you'll find a very beautiful sunset point, and फिर आप दर्शन करने के बाद में same ropeway से you can come back. The next place would be the Baahubali Hills. It is a very popular spot in Udaipur. वहाँ पे बहुत ही beautiful एक hill है जो कि it's right in the middle of the lake. So Baahubali Hills पे जाने के लिए it's towards the other side of the city, so definitely आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, and then आपको कोई conveyance होना ज़रूरी है आपके पास. And on the way to Baahubali Hills you'll see the बड़ी lake. As you can see, the ride towards the Baahubali Hills is really very beautiful. एक साइड पे बड़ी लेक है and एक साइड पे हम लोग
राइड कर रहे हैं एंड टूवर्ड्स द अदर साइड आर द हिल्स. सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रास्ता है ये. आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू पार्क योर व्हीकल एंड उसके बाद में एक ट्रैक है जो आपको कवर करना होगा टू रीच टू द हिल टॉप. The trek is of around 1 kilometer and then you'll reach at the hilltop. And the last place that I'll recommend everyone is the Sajjangarh Fort, which is also known as the Monsoon Palace. Sajjangarh Fort is about 15 to 20 minutes away from the old city. So the ticket to Sajjangarh Fort will cost you around 100 to 150 rupees per person. एंटर करने के बाद में इफ़ यू डोंट हैव योर ओन व्हीकल और आप नहीं ले जाना चाहते, अगर अपना व्हीकल आपके पास है भी, तो वहाँ पे उनके लोकल कुछ व्हीकल्स होते हैं, लाइक उनकी कार्स होती हैं, बोलेरो और सम कार्स लाइक दैट. सो वहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा आपको हिल साइड पे ऊपर जाना पड़ता है, सो उसके लिए यू कैन टेक दैट. आप वहाँ पे बुकिंग करा सकते हो. वो पर पर्सन आपको चार्ज करते हैं. आई थिंक पर पर्सन इट इज़ अराउंड 112 रुपीज़ और 111 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट. सो आपको इतने का 100 to 150 रुपीज़ के बिटवीन पर पर्सन आपको वो चार्ज करेंगे. एंड यू विल हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर द टैक्सी टू कम. एंड वो टैक्सी आपको वहाँ से एग्जैक्टली फोर्ट तक ले जाएंगे और वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे. यहाँ की भी एंट्री 5 PM पे क्लोज हो जाती है. सो मेक श्योर आप 5 PM से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ. The sunset view from the Sajjangarh Fort has to be one of the best sunsets I've ever seen in my life. And while in Udaipur, अगर आप कोई और sunset point miss भी कर रहे हो तो it's okay, but ये वाला sunset point बिल्कुल भी miss मत करना. And on top of all the things that I just mentioned for you to visit in Udaipur, I want to add on one more thing that you should definitely do while you will be in Udaipur, since you all know that Udaipur is a city of lakes. So there are so many restaurants in Udaipur where you can eat by the lakeside. And आपको definitely I'll recommend कि आप उदयपुर में कभी भी जाओ तो just at least for once कोई एक meal you can choose and go to some place, go to some restaurant and go to a place or go to any place जहाँ पे आपको lake side पे you are having your meal, you're enjoying your meal, because it feels really different. ये अलग सा experience होता है. We did not actually go to any restaurant per se, but while we were going to the Baahubali hills, वहाँ पे बड़ी लेक है and बड़ी लेक के बिल्कुल right by the lake there was a food truck. And हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया and it was really nice and a different experience altogether. These are my top 10 places or top 10 things that you can do in Udaipur. All of these places can be easily covered in 3 to 4 days. I really hope that this video helps you in planning your next trip to Udaipur. And I've tried to add in as much of information that I could. And with that, this video comes to an end. Thank you so much for watching. Bye bye.